for CET exam. Okay, so here I am taking their example on their topic of function. So before that, you should know what is called function. So relation between, so what you know here, y is function of x. So this is what function of x means. What y depends on x and x doesn't depends on y. So y is called dependent variable and x is called independent variable. So here I am taking their example of y is equal to sin x. Okay, so y depends on x, but y is function of x. So what is that function? Function is sin. So y is dependent variable and x is independent variable. So in this case, so here, if you are tracing that function where in interval for x, for all x belongs to interval minus pi by 2 to plus pi by 2, or 0 to pi is there. Wait, or 0 to 2 pi is there. So what is that graphical representation of their function? So here in interval 0 to 2 pi. So this is what from 0 to 2 pi. So it means that we get their complete cycle, whereas x runs from 0 to 2 pi. Okay, x runs from 0 to 2 pi is there. So here we get their complete cycle, whereas x runs from 0 to 2 pi. So this is what function. But here on function, we have to find their value of function at their particular value of x, which lies in their interval 0 to 2 pi is there. Suppose x is equals to pi by 2. If you are taking the x is pi by 2, what is that function? Value of function. Y means what? Y is function of x. That is equals to sin x. Okay, that is equals to function of x. So in this topic, you have to study to find their value of function at the different values of independent variables. Okay, so at x is pi by 2, what is value of that function at x is pi by 2? So f of pi by 2. So f of pi by 2 is what? Sin of pi by 2. And sin of pi by 2, it is what? This is what? 1. Sin of pi by 2 is 1. So here in this interval, that is from 0 to 2 pi, we can take their any value for x. So for every value of x, we can get their value of function. So here we have the different kind of function to find their value of function of function. For example, if function of x is equals to x square plus 4x plus 3. How to get their value of function? Then find, अगर आप लोगों को फंक्शन ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड करनी है, प्लस फंक्शन ऑफ -2 is there. So how to get their value of function of 1 and then f of -2 means sum of their functions. So in this function, substitute x is 1. So when x is 1, their value of function is what? F of 1 is equals to 1 square is 1 plus 4. Okay, so plus 3 is there. 3 plus 4, 7 plus 1, that is it. And then x is what? -2. So f of -2 is there. So what is that -2? -2 square is 4. Then -2 into, yes, 4, that is -8. -8 plus 3. So 4 minus 8 minus 4. -4 plus 3, that is -1. Okay. So this is what value of function at x is -2. Okay. Now here in this example, what they ask? Find value of f of 1 plus f of -2 means to find their sum of functions. F of 1 plus f of -2. F of -2 is there. So what is value of their function? So it is what? 8 plus -1, that is equals to plus 7. Now here there are variety of functions like trigonometry function, hyperbolic function, logarithmic functions, implicit function, explicit function, function of function, composite functions. So these are the
various kind of functions. Various kind of functions. So here we will see their example on composite function called as function of function. So two functions are given in this example. So this what example number 2, this what example number 1. Yes. So function of x is given. If f of x is equals to x raised to 4. So x raised to 4. And g of x is equals to 6x minus 2. 6x minus 2. Then find g of function of x. G of function of x means what? Composite function of x. So two functions are given, that is f of x and g of x. Need to find their value of composite function. Okay, see here. Two more functions are here and need to find their function of function, that is called composite function. So in this case, you know, g of f of x is g of f of x. What is function of x? Function of x is x raised to 4. Okay, function of x is x raised to 4. That is, you know, function of x is not x raised to 4. Now next to find that g of x raised to 4. What is g of x? 6x minus 2. 6x minus 2. So in place of x, you substitute there x raised to 4. So what is that change you are taking there in function? Same change should be there in RHS. So what is that change? That is equals to g of x क्या हो रहा है? 6x minus 2 हो रहा है. So how to get their g of x raised to 4? It is nothing but, so we have to take their change in place of x, and what is that change? Replace x by x raised to 4. So it is what? 6x raised to 4 minus 2. This is value of composite function. This is value of composite function. So see here, the next example there on value of function. Okay. If function of x is equal to sin square x plus sin square of x plus pi by 3. X plus pi by 3 plus cos of x into cos of x plus pi by 3. And g of 5 by 4 is given, that is equals to 1. Then find g composite f of x. G composite f of x. So how to get there? Here the value of function. Here, you know what is function of x? Function of x is given. To find here or simplify their value of function first. Find out how to simplify their value of function. So we will simplify by expanding their terms of, yes, some terms of their trigonometric function. So first you have to simplify their function of x. Yes, and to find here resulting value of function of x. And how to get the resulting value of function of x? You have to expand their sine square of x plus pi by 3. Sine square of x plus pi by 3, it means that what? Sine of x plus pi by 3 whole square is there. That I am here using. That same steps. Okay.
So f of x is what? Sine square x. F of x is sine square x plus sine of x. We can write this as sine of x plus pi by 3. Whole square is there. Okay. Plus cos of x into cos of x plus pi by 3. Need to find their expansion. Sine square x keep as it is. Sine square x keep as it. Okay. Then sine of x plus pi by 3. Sine of x plus pi by 3 whole square means what? Sine of a plus b square. So sine of a plus b means what? Sine a cos b. Okay. So that I am expanding here by using their addition formula of sine. Sine of a plus b means what? Sine a. Sine a into cos of pi by 3. Cos of pi by 3 means what? Cos 60. It is 1 by 2. So these values here in this I write directly. Okay. Plus. What is that next? Sine a cos b plus cos a. Cos A sin B. Cos A sin B. Sin B means what? Sin of pi by 3 means sin 60. And sin 60 is what? Root of 3 by 2. Root of 3 by 2 whole square is there. Plus cos of x into cos of A plus B. And what is that cos of A plus B? And how to get their expansion? Cos of A plus B means what? A cos B, cos A cos B. That is what? Cos of A into cos of pi by 3. Cos of pi by 3 means what? Cos 60. And cos 60 is what? 1 by 2. Okay. Plus, sorry, minus is there. Cos A plus B, do you know that formula? Cos of A minus B is what? Cos of A plus B is what? Cos A cos B minus sin A sin B. Sin A. Sin A means what? Sin X into sin of B means sin of 60, and sin of 60 is what? Root of 3 by 2. Yes, it is what? Root of 3 upon 2. It is root of 3 upon 2. Okay. Now, then you expand their whole function. And what is that expansion of that whole function? You know, a plus b whole square is what? A square plus b square plus twice ab. Okay. Sine square x plus a square. A square means what? Sine x whole square into 1 by 2 square. That is sine square x upon 4 is there. Okay. Sine square x upon 4. Okay. Plus b square. B square means what? Root of 3 by 2 whole square means what? 3 by 4 is there. Means cos square x into 3 by 4. So it is what? 3 by 4 is there. This is what? 3 by 4. Plus twice into cos of A into cos of B. Twice means what? There 2 into 1 by 2 get cancelled. Okay. So 2 into 1 by 2 into 3 root of 3 by 2 means root of 3 by 2 into 1 by 2, that is root of 3 by 4. So into root of 3 by 4 into sin x cos x. Sin x cos x is there. Now in here in second factor, what is that expansion? Cos A cos B means what? Cos of x into cos of x, that is cos square x upon 2 is there. Cos square x upon 2 minus cos x sin x. Yes, sin x cos x. Sin x into cos x into root of 3 by 2 is there. Root of 3 by 2. So you know here, 2 get cancelled. They remain root of 3 by 2 sin x cos x. ये plus होता है, देखो ये minus है. ये दोनों term cancel होंगे. These two terms will cancel. You know here, sin square x by 4 or a sin square x. What is sum of them? 4 into sin square x plus 1. So sum of them is what? Phi u. Right? Phi u sin square x upon 4 is there. Phi u sin square x upon 4. Plus, what is that next?
सम ऑफ द टर्म हैविंग cos square x, so 3/4 into cos square x और एक cos square x by 2, मतलब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना, so 2 into 2 4 and this 2 plus 3 it is 5, so 5u cos square x, okay, 5u cos square x upon 4 is there. Okay, now in this case 5/4 is common to both, take it outside. So 5/4 times into sin square plus cos square, it is 1 na? So this is nothing but what, 5/4. 5/4 into sin square x plus cos square x. So this is what, 1. Okay. So we are getting their value of function is what, 5/4. So what actually want? They ask their value of g composite of function of x, means what, to find their function of function. So which value here in this case we have to determine, ये वैल्यू आप लोगों को फाइंड करना है, g composite of f with x, g composite f of x. So this value to find. So to find here g composite f of x. So what does it means? G of function of x. G of function of x. So g of function of x is what? What is function of x? It is 5/4. 5/4 is there. G of function of x is what? 5/4. 5/4. Okay. And g of 5/4, their value is given. It is 1, na? So this is 1. So are you clear? What is value of composite function? G composite f of x is what? 1. So we have got this value by simplifying their function of x. And how you simplify? There are some square terms in this function of x. So you have to expand it. ये लोग आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, ये टर्म्स एक्सपांड करना है, और एक्सपांशन होने के बाद so we get the value of function as 5/4 is there. Okay, so what is value of composite function? That is value of composite function is 1. So this will be correct answer. This will be correct answer, that is 1. Okay. See here the next example, that is inverse function and their function of function. Here y is what, function of x. Y क्या होता है, function of x. So this what, function of x. But when you shift that f to LHS, get their f inverse of y. And what is that f inverse of y? F inverse of y is x. So y depends on x, x depends on y. So y is called function of x, but where x is called inverse function of y. You got it? Yes. Now here in the next example, to find their value of inverse function. Okay. The inverse function of y is, okay. See here the next example. The inverse function of y is equals to 16 raised to x minus 16 raised to minus x upon 16 raised to x plus 16 raised to minus x. Okay, is, so it means that to find their inverse function of y, मतलब y का inverse function क्या हो सकता है? So y is what, function of x ना, ये y क्या होता है, function of x है. तो आप लोगों को x की वैल्यू फाइंड करना है, मतलब x is क्या होता है रे, x is inverse function of, yes, it means to find their inverse of, yes, y is function of x, so need to find their inverse of function of y, मतलब f inverse of y, ये वैल्यू आप लोगों को कैलकुलेट करना है. And how to get this value, here. So you have to simplify their value of function, and here we know let y is equals to, after expanding 16 raised to x minus 16 raised to minus x, और 16 raised to minus x क्या होता है, 1/16 raised to x. So I need to find their LCM. So what is that LCM? That's LCM का असेल 16 raised to x minus 1 upon, ये आप कैसे लिखोगे, 16 raised to x, आप ऐसे लिखते हैं, upon
16 raised to x plus 1 upon 16 raised to x होता है. So what is that LCM? You know, their LCM is out 16 raised to x into 16 raised to x is out 16 raised to x whole square. मतलब आप कैसे लिखोगे? 16 raised to 2x minus 1 upon 16 raised to x. Here, to take their LCM, 16 raised to x into 16 raised to x, that is 16 raised to 2x. ये आप लोगों को मिलेगा. ये प्लस 1 होता है. And the term of 16 raised to x will cancel from NRDR after LCM. मतलब ये आप लोगों को टर्म मिलेगी 16 raised to 2x minus 1 upon 16 raised to 2x plus 1. ये वैल्यू आप लोगों को मिलेगी. But what actually we have to determine? Yes, we have to determine there x means what f inverse of y. आप लोगों को x find करना है. Actually, it is what y in terms of x. So I have to express their x in terms of y. Yes, I have to express their x in terms of y. Okay. Now we can get simply by using the process of component and dividend. And you are known about their component and dividend. So you know, for example, what is that component and dividend? That we have to see. A by B is equal to C by D. So when you are operating the any operation, they're in numerator. That is like addition and subtraction. They're in both the sides, like A plus B upon C plus D, or A minus B upon B is equal to C minus D upon D. So if you are operating the any operation there in numerator, here in both these sides, that is called componendo. And when you operate their operation there on division, it is called dividendo. But instead of that, you are applying both the operations there on numerator and denominator, that is called componendo and dividendo. Componendo and dividendo. So what actually you want there in numerator, the term of 16 raised to 2x. ये term आप लोगों को चाहिए. So it means that using their operation of addition in numerator, they are on both the sides. मतलब ये आप ऑपरेशन कैसे करेंगे? A plus B, that is equals to आप कैसे लिख सकते हैं? C plus D. मतलब we have apply their operation numerator, that is called component. Now upon A minus B, that is equals to C minus D. That is equals to C minus D. So similar type of operation we have to apply there in numerator. Okay. यहाँ पे आप कैसे अप्लाई करेंगे? 16 raised to x minus 1 plus 16 raised to 2x is there, not minus. 16 raised to 2x plus 1 is there. This is called, yes. So same operation should be there in LHS. Same operation should be there in LHS. So what is that operation? Numerator plus denominator. मतलब आप कैसे लिखोगे? यहाँ पे भी लेना है ना. तो what is that? Yes, y plus 1. It is numerator plus denominator. What is there in RHS? Numerator plus denominator upon numerator minus denominator. Numerator minus denominator. Okay. Numerator minus denominator. कौन सा भी आप ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं? Numerator minus denominator. So what is that numerator? ये numerator है देखो. 16 raised to 2x minus 1 and minus 16 raised to 2x plus 1. Okay? हा minus 1 and हा plus 1. They get cancelled. What is that remaining? You know, 16 raised to ये plus होता है देखो. ये 16 raised to 2x और ये minus 16 raised to 2x. They get cancelled. ये -1 और ये -1 क्या होगा? -2 होता है. मतलब twice into 16 raised to 2x, right ना, upon -1 that is -2. So 2 get cancelled. Here in this case there will remain only minus 16 raised to 2x is there. 16 raised to 2x. So y plus 1 upon y minus 1 is minus 16 raised to 2x. So here we have to remove that negative sign therein
RHS. So how to remove there? You have to shift there into RHS. How to shift there into RHS? 16 raised to 2x is equals to, when you shift that negative sign to RHS, what it becomes? So there will be effect on denominator. So minus times into 1 plus y. Okay. Upon, in this case, I will write there y minus 1. मतलब ये मैं कैसे लिखूंगा? minus 1 plus y is there. And we have to apply there on, yes, factor in denominator. So 1 plus y upon, when you operate this negative sign on there on denominator, so minus become plus and then plus become minus. So 1 minus y is there. So what is their value of 16 raised to 2x? We will see there in next page. Okay. 16 raised to 2x, that is equals to 1 plus y upon 1 minus y. Upon 1 minus. Okay. So how to get their value of x? Taking log on both the sides. When you remove that 16 there in LHS, in RHS there will be log of, क्या मिलेगा आप लोगों को? 1 plus y upon 1 minus y upon 1 minus y to the base 16. That is equals to क्या मिलेगा आप लोगों को? 2x मिलेगा. What is that x? X is equals to 1 by 2 times log to the base 16 of 1 plus y upon 1 minus upon 1 minus y. So this what? Yes. X is equals to half times into log of 1 plus y by 1 minus y is there. So what is that x? X is nothing but f inverse of y, and that you know already. Here in this you are known that y is function of x means what? F inverse of y is x. मतलब ये आप कैसे लिखोगे x? It is nothing but f inverse of y. F inverse of y. So f inverse of y is 1 by 2 times into log to the base 16 into 1 plus y upon 1 minus y. Upon 1 minus y. And this will be the solution of their example. Okay. Here we have got the inverse of function of y is there. Question was there, the inverse of function of y. So inverse of function of y is what? Inverse of function of y is what? Half into log to the base 16 of 1 plus y by 1 minus y. Okay. So we have seen there some of the examples there on function. So after that, we'll see here the limits. Okay. So here in limit there are some results, and their results are important as well as their, yes, some concepts. Limit means what? To here to substitute their any value of variables to their functions. In their functions. Okay. So for example, limit of function of x as x tends to a. So what does it means? X की जगह आप लोगों को ये substitute करना है. So f of a is there. That is called limit. So x tends to a means what? X approaches to a. मतलब x कहाँ तक पहुंच रहा है? A तक पहुंच रहा है. Yes. X will approaches towards a or x tends to a. It means what? Yes, it is function of a, and function of x means function of a means what? Value of function at x is a. Value of function at x is a. So here in limit there are some results. What are the results? Sine inverse of, or sine of x. There, so some results or important results that I am going to share with you. कौन से रिजल्ट होते हैं? A f of a. Okay. So limit of f of x plus minus g of x as x tends to a. So what does it means? Limit of sum or difference of function is equal to sum or difference of their limit. So this what first result means what? Limit कहाँ पे आप apply करेंगे? Function के ऊपर apply करेंगे. So x tends to a plus minus
limit to g of x as x tends to ये मिलेगा. So what is that next? This is what limit of sum or difference. The next formula is of limit of product is nothing but product of their limits. Limit as x tends to a to f of x into g of x. And what is that limit of f of x into g of x? It is nothing but what? Product of their limits. Means what? Limit of f of x as x tends to a into limit to g of x as x tends to a is there. Means what? Limit of product is nothing but product of their limits. And what about their last? Their limit of division. So these results are known to you already. So third one is what? Limit of division. Limit of f of x upon g of x as x tends to e is limit to f of x as x tends to e divided by limit to g of x as x tends to e. So it means that limit of sum or difference is equal to sum or difference of their limits. Limits of product is equal to product of their limits, and limit of division is equal to division of their limits. Division of their limits. Okay. We'll see here some results or some examples there on limits. See here the example. If limit to x raised to 4 minus k raised to 4 upon x raised to 3 minus k raised to 3 as x tends to k. As x tends to k. Okay. Then find value of k. Then find value of k. Then k is equals to equation. So here in limit, there are some results. Here along with examples, I will state their results beside their steps, respective steps. You know, here limit. So wait. Actual result is yes. So before that, one function is given. ये दिया है देखो. If limit as x tends to 5 minus 1 upon x minus 1, that is equals to as x tends to 1 2. Yes, x tends to 1 2. Okay. So here in both these sides limits are given. Need to find their k, where k is constant. Okay. So limit to x raised to 5 minus 1 by x minus 1 as x tends to 1 is equals to limit to x raised to 4 minus k raised to 4 upon x cube minus k cube is there. Then find k, means to find their value of k. Okay, no doubt. We know here the results in limit. So result in limit is that limit to x raised to n minus a raised to n upon x minus a as x tends to a is n into a raised to n minus 1. Okay, ये रिजल्ट होता है. ये रिजल्ट आप लोगों को कहां पे यूज करना है? देयर इन LHS. So LHS is same. 1 means what? 1 raised to 5. Here we have to simplify their terms one by one. So consider their LHS first. So what is their LHS? Need to find their value of LHS. So their LHS is what? X raised to limit as x tends to 1 to
x raised to 5 minus 1 upon x minus 1. So 1 means what? 1 raised to 5 is there. And here on this limit we apply their result, standard result, x raised to n minus a raised to n by x raised to a. मतलब यहाँ पे सेम डिनोमिनेटर्स होता है. So a की जगह क्या होता है? 1. So put there n is equals to 5. So पावर क्या होती है? 5 होती है. So 5 into a is what? 1 raised to n minus 1 means 5 minus 1, 4 is there. So 1 raised to 4, it is 1. So get there 5 only. So 5 is the value of LHS. Similarly, to find their value of RHS. And how to get their value of RHS? So we will get their value of RHS by applying their same result or same standard formula of limit. And what is that standard formula of limit? Limit as x tends to k2, x raised to 4 minus k raised to 4 upon x minus k divided by, so we have to divide their x minus k to numerator as well as denominator so that we can use their standard results of limit. Okay, so here x cube minus k cube upon x minus k, that is equals to, when you are applying the limit individually as x tends to k to these two functions, so what is there? यहाँ पे आप लिमिट्स सेपरेटली अप्लाई कर सकते हैं. So limit of division is nothing but division of their limits. So limit of numerator as well as limit of denominator. And what it becomes? Yes, यहाँ पे आप कैसे लिखेंगे? x raised to n minus a raised to n upon x minus a means what? न्यूमरेटर का लिमिट क्या मिलेगा आप लोगों को? 4 into k raised to ना 4 minus 1 that is 3 upon डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा रे? 3 into मतलब n ना, n into k raised to 3 minus 1 that is 2. This is what LHS. This is what LHS, and that, sorry, this is RHS, and there in LHS it is 5 na. So equate with 5. Can we get their value of k? Yes. तो यहाँ पे k square cancel होते हैं. तो क्या रहेगा रे? 4k upon 3 that is equals to 5. हे राहील लक्षात. मग k ची व्हॅल्यू काय होणार सांगा? Yes, their value of k is 3 into 5, 15. 15 upon 4 is there. 15 upon 4. And this is what correct solution or correct options for this example. तो ये example में ये correct option होते हैं. Okay, so k is equals to 15 by 4. So in their exam they will provide to you 4 more options. So you have to select their correct option. So correct options will be, yes, correct option is that 15 by 4 is there. ये correct option होता है. Now here, there is one result in limit. Sometimes you are getting the limits in the form of 0 by 0 or infinity by infinity. 0 by 0 or infinity by infinity. So in that case, how to get their finite limit? Their finite limit will be obtained by using their L'Hospital rule. L'Hospital rule. And which is that L'Hospital rule? Rule said that when limit of function is in the form like 0 by 0 or infinity by infinity, then taking derivative of numerator as well as denominator separately. We will see here such a kind of simple example there on same. Yes? Second example. See here. Limit to sine inverse of s x plus pi upon x square plus pi x. As x tends to minus pi is there, yes, correct. तो आप लोगों को इसी लिमिट की वैल्यू फाइंड करना है. यस, सो हाउ टू गेट देयर लिमिट टू देयर फंक्शन. देखो अगर यहाँ पे लिमिट अप्लाई करें तो उसकी वैल्यू क्या हो सकती है. देखो, सो यू कम इन देयर लिमिट. आई विल एक्सप्लेन डायरेक्टली. सब्स्टिट्यूट x इज माइनस पाई, मतलब माइनस पाई प्लस पाई क्या होगा रे?
माइनस पाई प्लस पाई इज जीरो एंड साइन इनवर्स ऑफ जीरो क्या होता है, जीरो होता है, अपॉन एक्स इज माइनस पाई स्क्वायर इज प्लस 25 एंड 5 इंटू माइनस पाई माइनस 25. सो 25 माइनस 25 क्या होगा रे, जीरो होता है. मतलब क्या होगा, लिमिट जीरो बाय जीरो. So what is that proper value of 0 by 0? It doesn't have a specific value. It is called indeterminate form. So we cannot determine their value of functions, or we cannot cancel their terms of 0 from numerator and denominator. We can cancel their terms of non-zero from numerator and denominator. But there is not possible to cancel their term of 0. They are from numerator as well as denominator is there. Okay. So in that case, what will you do? By applying the L'Hospital rule. So this rule is applicable only at limit 0 by 0 or infinity by infinity. So we are getting the limits in the form of 0 by 0. Okay. So limit as x tends to minus pi 2. Okay. तो आप लोगों को साइन इनवर्स का डेरिवेटिव लेना है. एंड व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स? इट इज 1 अपॉन रूट ऑफ, यस, 1 माइनस क्या होता है रे, x प्लस पाई होता है. x प्लस पाई होल स्क्वायर इज देयर into, so you know their general differential formula for sin inverse of x. So differential of sin inverse of x is what, 1 upon root of 1 minus x square. But there is what, x plus 5. So into what, derivative of x plus 5 with respect to x, it is 1. Okay. So upon derivative of x square plus 5x, not to apply here the quotient law या division law in their differential. आप लोगों को यहाँ पे न्यूमरेटर में डिफरेंशियल और डिनोमिनेटर में डिफरेंशियल सेपरेटली लेना है. सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x. ओके. प्लस 5x का डेरिवेटिव क्या होगा रे, 5 होता है. अभी लिमिट अप्लाई करके देखो क्या होता है. व्हाट इज द लिमिट, यू नो हियर व्हेन अप्लाई द लिमिट एज एक्स टेंड्स टू माइनस 5 प्लस 5 इट इज 0. 0 स्क्वायर म्हणजे काय होईल, 0. and 1 minus 0 1, root of 1 1, 1 by 1 1 into 1 1, मतलब 1 मिलता है. अपॉन, यस, अपॉन क्या होगा रे, x is what, minus 5. minus 5 into 2 minus 10. minus 10 plus 5 minus 5. so correct option क्या हो सकता है रे, 1 upon minus 5 ना. so 1 upon minus 5 is there. correct option will be minus 1 by 5. okay. so minus 1 by 5. See here the next example there on limit. यहाँ पे सिंपल एग्जांपल होते हैं देखो. सो इससे पहले आप लोगों को रिजल्ट अंडरस्टैंड होना जरूरी है. सो देयर आर सिंपल रिजल्ट्स इन लिमिट्स. सी हियर द नेक्स्ट एग्जांपल देयर ऑन लिमिट. द वैल्यू ऑफ limit as x tends to infinity to minus infinity is there, not plus infinity. minus infinity to root of 5x square plus 4x plus 7 upon 5x plus 4. असं मिळतं ना, 5x square plus 4x plus 7 upon 5x plus 4 is. ये आपल्याला घ्यायचं. अगर आप यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर रहे हैं एज x टेंड्स टू माइनस इनफिनिटी, तो माइनस इनफिनिटी स्क्वायर माइनस इनफिनिटी, यहाँ पे माइनस इनफिनिटी, रूट ऑफ माइनस इनफिनिटी अपॉन माइनस इनफिनिटी हो रहे हैं. लेकिन देखो ये प्लस इनफिनिटी में कन्वर्ट करे तो आप कैसे कर सकते हैं. यस, हाउ यू कन्वर्ट देयर लिमिट फ्रॉम माइनस टू प्लस, बाय सब्स्टिट्यूटिंग. काय सब्स्टिट्यूट करना सांगा, x इज इक्वल टू माइनस वाई. अगर आप x इज माइनस वाई सब्स्टिट्यूट करें, सो यू नो एज x टेंड्स टू माइनस इनफिनिटी लिमिट अप्लाई करेंगे तो x इज माइनस इनफिनिटी मींस that is equals to minus y. It means that y is equals to plus infinity. y ची व्हॅल्यू काय होणार, प्लस इन्फिनिटी. ओके, यू कम इन दिस लिमिट.
So why taken their substitution like x is minus y? Because need to use their plus infinity as a limit. Okay, so limit as y tends to infinity to. So which is that change you have taken? x is equals to माइनस वाई, वो चेंज आप लोगों को यहाँ पे करना है. मतलब क्या चेंज होगा रे? माइनस वाई का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब माइनस वाई स्क्वायर, दैट इज प्लस वाई स्क्वायर. सो 5y स्क्वायर. व्हाट इज द नेक्स्ट? x इज माइनस वाई मतलब माइनस 4y प्लस क्या होगा रे? प्लस 7 अपॉन 5 इंटू क्या होगा रे? x इज वॉट? माइनस वाई मतलब माइनस 5y प्लस 4 इज देयर. ये मिलेगा. देखो अगर यहाँ पे लिमिट अप्लाई करें तो क्या होगा? So what is that limit? Y is what? Infinity. Infinity square. So we can get their solution either by L'Hospital rule or by using their suitable, yes, suitable simplification. So which is that simplification? If you are converting their term of y in the form of 1 by y. So when you convert their term of y in the form of 1 by y and then applying limit as y tends to infinity, 1 by infinity क्या होगा रे? 0 होता है. तो इसमें से आप y स्क्वायर कॉमन लेंगे और इसमें से y कॉमन लेना. तो आप क्या कर सकते हैं? Instead of applying their L'Hospital rule, we can get their finite value of their limit to function. Okay. तो ये आप कैसे सॉल्व करेंगे? That is equals to limit as y tends to infinity to क्या होगा रे? रूट ऑफ वाई स्क्वायर कॉमन लेना. सो वाई स्क्वायर टाइम्स इंटू 5 माइनस 4 अपॉन वाई प्लस 7 अपॉन वाई स्क्वायर. ओके, 7 अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन वाई कॉमन लेगा माइनस 5 प्लस 4 अपॉन वाई इज देयर. ओके, तो रूट ऑफ वाई स्क्वायर मतलब वाई ना. रूट ऑफ ए भी आप कैसे लिखते हो? डू नो दैट रिजल्ट ऑफ एस इंडेक्स, दिस व्हाट इंडेक्स लॉ, रूट ऑफ ए इनटू रूट ऑफ बी. तो ये रिजल्ट यहां पे अप्लाई करना है. तो आप कैसे अप्लाई करेंगे? देखो, यस, लिमिट एज वाई टेंड्स टू इंफिनिटी टू रूट ऑफ वाई स्क्वायर काय काय मिळेल रे? वाई इनटू रूट ऑफ क्या होगा यहाँ पे? 5 माइनस 4 बाय वाई प्लस 7 बाय वाई स्क्वायर. ओके, अपॉन यहाँ पे y होता है. सो y इंटू माइनस 5 प्लस 4 बाय वाई. तो यहाँ पे क्या होता है? देखो, ये y कैंसिल होता है और लिमिट अप्लाई करना y टेंड्स टू इंफिनिटी मतलब 4 बाय इंफिनिटी 0, 1 बाय इंफिनिटी 0, इंफिनिटी स्क्वायर इंफिनिटी मीन 7 बाय इंफिनिटी 0. यहाँ पे माइनस 0 प्लस 0 0, लेकिन क्या रहेगा यहाँ पे? रूट 5 होता है. सो रूट ऑफ 5 अपॉन यहाँ पे क्या होगा रे? माइनस 5 होता है. सो 5 मीन्स व्हाट? रूट 5 स्क्वायर. व्हाट इज दैट? माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 5. एक करेक्ट ऑप्शन होता है. हा करेक्ट ऑप्शन असेल. सो हाउ it is the correct option? minus 1 by root of 5. so minus keep as it is and 5 means what? root of 5 square. root of 5 square मतलब root 5 get cancel, there remain 1 by root 5. हा 1 by root 5 राहतो इकडे. कळलं का? तो ये minus 1 by root of 5 is correct option for which example? ये example के लिए. okay, see at the next example. if the function of x satisfies limit as x tends to 1 to 2 times into function of x minus pi upon 2 times into x square minus 1, that is equals to e. Then आप लोगों को क्या फाइंड करना है? देखो,
then function of x लिमिट एज एक्स टेंस टू 1 टू फंक्शन ऑफ एक्स, ये वैल्यू आप लोगों को फाइंड करनी है। देन लिमिट एज एक्स टेंस टू 1 टू फंक्शन ऑफ एक्स, ये वैल्यू आप लोगों को फाइंड आउट करनी है। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, देखो हाउ टू गेट दिस वैल्यू। तो ये वैल्यू फाइंड करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, पहले ये लिमिट दिया है, देखो ट्वाइस इंटू फंक्शन ऑफ एक्स, बराबर है ना, -5/2 इंटू एक्स स्क्वायर -1 दैट इज इक्वल टू। तो इसमें से आप लोगों को क्या करना है, देखो आप लोगों को क्या फाइंड करना है, लिमिट टू फंक्शन ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू 1, ये लिमिट फाइंड करना है। ओके, सी हियर, दैट इज, सो कंसिडर हियर द सेम लिमिट एज एक्स टेंड्स टू 1 टू, इसमें से 2 कैंसिल करना। देखो कैंसिल आप कैसे कर सकते हैं, देखो हाउ टू कैंसिल द टर्म ऑफ 2, 2 टाइम्स इनटू 2 अगर आप कॉमन ले रहे तो क्या होगा, 2 टाइम्स इनटू फंक्शन ऑफ एक्स माइनस π/2 अपॉन 2 टाइम्स इनटू एक्स स्क्वायर -1 एक्स स्क्वायर में, ये 2 क्या होता है, कैंसिल होता है। ओके, एंड दैट इज इक्वल टू 2 रहेगा, सॉरी दैट इज इक्वल टू ई रहेगा। And already you are known that if there is division of limit, so we can apply their limit to their function individually. It means that limit of division is equal to division of their limits, right ना। तो आप सेपरेटली लिमिट अप्लाई कर सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के लिए। कैसे अप्लाई करेंगे, लिमिट एज एक्स टेंड्स टू 1 टू, कहां पे अप्लाई कर रहे हैं, यहां पे, दैट इज एफ ऑफ एक्स -π/2, बराबर है, ऐसा मिले। एंड डिवाइड बाय क्या होता है रे, डिवाइडेड बाय लिमिट एज एक्स टेंड्स टू 1 टू एक्स स्क्वायर -1 असं लिमिट घेते, दैट इज इक्वल टू ई ना, दैट इज इक्वल टू ई असेल। और ये जो लिमिट है राइट में शिफ्ट करना, तो आपको क्या मिलेगा, यस लिमिट टू लिमिट एज एक्स टेंड्स टू 1 टू क्या होगा रे, एफ ऑफ एक्स -π/2, बराबर है, दैट इज इक्वल टू ई टाइम्स इनटू लिमिट टू एक्स स्क्वायर -1 एज एक्स टेंड्स टू 1। So 1 square 1, 1 minus 1 0, 0 into e 0. So limit as x tends to 1 to f of x minus π/2, that is equals to क्या मिल रहा है आप लोगों को, 0 मिल रहा है। तो यहाँ पे इंडिविजुअली लिमिट अप्लाई करना, no limit will be applied on their constant function, their constant function is π/2 but limit will be applied on their function with x। तो पहले फंक्शन जो होता है उसके ऊपर लिमिट अप्लाई होगा, लिमिट एज एक्स टेंड्स टू 1 टू एफ ऑफ एक्स, मैं ऐसे लिखूंगा, एंड विल अप्लाई द लिमिट ऑन कांस्टेंट फंक्शन दैट इज π/2, यस यस इट इज कांस्टेंट फंक्शन के ऊपर आप लिमिट अप्लाई करोगे नहीं। So where there is x, we can apply the limit as x tends to 1, means it is what, क्या मिलना सांगा रे, π/2 that is equals to 0 मिले। So you know, so which value you want, limit to function of x as x tends to 1, so what value will be there for same limits, it is π/2, shift that to RHS। मतलब आप कैसे करेंगे, limit as x tends to 1 to function of x that is equals to π/2, काय मिळणार तुम्हाला, π/2 मिळेल। तो ये π/2 करेक्ट ऑप्शन होता है, देखो π/2 क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, ये π/2 क्या होते हैं, करेक्ट ऑप्शन। ओके, so here the next example, they're on same, the value of
the value of limit as x tends to 0 to, okay, 1 plus sin x, 1 plus sin x minus cos x plus log of 1 minus x to the base c, okay, upon x cube. इसी का आप लोगों को क्या करना है, लिमिट फाइंड करना है. देखो दैट इज इक्वल टू ये वैल्यू फाइंड करना है, इसकी वैल्यू. तो आप इनकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखो. सो व्हेन अप्लाई द लिमिट एज x टेंड्स टू 0, काय होणार आहे, sin 0 0, cos 0 1, 1 minus 1 0 and log of 1 0. So 0 upon 0 no, 0 upon 0. So we can get their limit by two more method. One is by L'Hospital rule and other is by expansion method. Sin x, cos x, log, these are the types of function. We can expand it in powers of x by using their Maclaurin's series या Maclaurin's expansion. आप क्या कर सकते हैं, ये जो फंक्शन ऑफ एक्स होता है, कौन सा भी फंक्शन ऑफ एक्स जो होता है, वो आप पावर ऑफ एक्स के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं. कैसे, बाय यूजिंग देयर कौन सा, तो मैक्लॉरिन सीरीज. सो बाय मैक्लॉरिन सीरीज देयर इज पॉसिबल टू एक्सपांड एनी काइंड ऑफ फंक्शंस इन पावर्स ऑफ एक्स. पावर्स ऑफ एक्स में आप क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो आप कैसे करेंगे, सी हियर. सो हियर टू गेट द लिमिट for this function as x tends to 0 within few number of steps only by applying their expansion. Instead of that, if you are applying the L'Hospital rule, process will lengthy. Okay, that you can decide it from their types of example. Okay, so limit as x tends to 0 to, you have to take here the expansion of function. You know what is expansion of sin x? Sin x का expansion, sin x itself is odd function and you have to expand their sin function in powers of x, and in their powers there will be odd terms, odd powers will be there. And what are the odd powers, x minus x cube upon 3 factorial, पता है ना, ये odd powers होते हैं, and having alternating plus minus sign, so x raised to 5 upon 5 factorial minus and so on. Okay, minus and so on, minus. Now you know cos of x is an even function. It means that there will be even powers of x. And what are the even powers of x? 1 minus x square upon 2 factorial, बरोबर आहे ना, असं मिळेल, प्लस x raised to 4 upon 4 factorial. नेक्स्ट टर्म कौन सा हो सकता है, माइनस एक्स रेज टू 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल अशा मिळतील. and plus you know log of 1 minus x, what is that expansion of log of 1 minus x? All terms will be negative, so negative sign will be outside for their function. So log of 1 minus x में क्या होते हैं, सभी टर्म्स नेगेटिव होते हैं, इसलिए मैं नेगेटिव साइन बाहर ले रहा हूं. सो माइनस इंटू प्लस इट इज क्या होणार आहे, तो माइनस होणार. लक्षात, हा माइनस होईल, तो ये माइनस होता है. और रिमेनिंग टर्म कैसे होते हैं, x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स रेज टू 4 बाय 4 प्लस एंड सो ऑन, ये टर्म होते हैं अपॉन एक्स क्यूब. लिमिट एज एक्स टेंड्स टू 0 टू, लिमिट एज एक्स टेंड्स टू 0 टू, देखो कौन से टर्म आप कैंसिल कर सकते हैं इसमें से. तो ये 1 है, ये -1 कैंसिल होगा, यहाँ पे x होता है, ये प्लस x है और ये माइनस x है, दोनों भी कैंसिल होंगे. ओके, एंड फ्रॉम द रिमेनिंग टर्म्स, यस, फ्रॉम द रिमेनिंग टर्म्स, which terms we can cancel, one more terms we can cancel here, you know, ये माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 और ये माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 थे, वो भी कैंसिल होते हैं. तो यहाँ पे कौन सी टर्म मिलेगी आप लोगों को, एक्स क्यूब की.
नेक्स्ट टर्म एक्स क्यूब की होती है, देखो एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे क्या करना, माइनस एक्स क्यूब बाहर लेना. So when you take here minus x cube as common, so there will remain so 1 by 3 factorial, that is 1 by 6. इकडे 1 by 6. यहाँ पे क्या होता है, x cube कॉमन लिया है, माइनस एक्स क्यूब अगर आप कॉमन लिया है तो 1 by 3 रहेगा. सो प्लस 1 by 3 ओके, प्लस 1 by 3 ये मिलेगा. नेक्स्ट क्या हो सकता है रे, सो आफ्टर दैट x cube there will be term of x raised to 4. In ascending order you have to consider their terms. Ascending orders मतलब पहली टर्म क्या होते हैं, x raised to 0, x square, x cube, इसी टाइप्स के आप लोगों को टर्म्स क्या करने, कंसिडर करने. तो नेक्स्ट क्या आप करोगे, माइनस एक्स रेस टू 4 कॉमन लेना, माइनस एक्स रेस टू 4 कॉमन घेतला तो क्या कौन सी टर्म रहेगी रे, यस 1 by 4 फैक्टोरियल, तो 1 by 4 फैक्टोरियल, मैं यहाँ पे 1 by 4 फैक्टोरियल लिख रहा हूँ. यहाँ पे देखो x रेस टू 4 by 4 माइनस एक्स रेस टू 4 अगर आप कॉमन ले रहे हो तो क्या रहेगा रे, 1 प्लस 1 by 4. ओके, प्लस उसके आगे आप क्या लिखोगे रे, प्लस टर्म कंटेनिंग x, प्लस टर्म कंटेनिंग x. नहीं तो अगर आप टर्म्स लेना चाहते हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स हो सकते हैं, उतना ही पर्स मत लेना. yes, you consider there at least first two या 3 terms. Here in this case we have taken there 2 terms only. डिवाइड बाय क्या होता है, एक्स क्यूब होता है. देखो अगर आप एक्स क्यूब से डिवाइड कर रहे हैं न्यूमरेटर को तो क्या होगा, एक्स क्यूब कैंसिल होता है, तो यहाँ पे कौन सी टर्म रहेगी, माइनस 1 by 6 प्लस 1 by 3. ओके सॉरी, 1 by 6 प्लस 1 by 3 मतलब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना तो एलसीएम सेम हो सकता है. अगर आप एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कौन सी टर्म रहेगी, माइनस 1 by 6 प्लस 1 by 3, ये कांस्टेंट रहती है. और यहाँ पे अगर आप एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, एक्स रहेगा ना. तो व्हेन अप्लाई द लिमिट एज एक्स टेंड्स टू 0 इन रिमेनिंग टर्म्स एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म देयर विल बी 0. एक्स क्यूब जातो, इकडे काय राहणार x. अगर आप लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 अप्लाई करेंगे तो ये सभी टर्म में 0 मिलेगा, तो ये टर्म आप लोगों को मिलेगी. सो लिमिट एज, चाहे तो मैं यहाँ पे टर्म लिख रहा हूँ x रेज टू 0, x टेंड्स टू 0 टू एक्स क्यूब से डिवाइड करें तो माइनस x इंटू 1 by 4 फैक्टोरियल प्लस 1 by 4 ऐसे मिलेगा. ओके, सो प्लस टर्म कंटेनिंग x, बराबर ना. And when you apply the limit as x tends to 0, except first term, remaining terms will be 0 because in remaining terms there will be x as a scalar multiple, बराबर ना. मतलब क्या होता है, रिमेनिंग टर्म में x क्या होता है, मल्टीपल टर्म होती है, इसलिए सभी टर्म 0 होते हैं. लेकिन फर्स्ट टर्म में क्या होते हैं, x की टर्म नहीं है, मींस व्हाट, नो टर्म ऑफ x एज ए स्केलर मल्टीपल इन फर्स्ट. तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई करना तो ये सभी टर्म 0 होते हैं. कौन सी टर्म रहेगी, माइनस टाइम्स इंटू 1 by 6 प्लस 1 by 3 मतलब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना, 2 into 3 6, 2 plus 1 it is 3, 3 by 6, 3 by 6 and minus 3 by 6 means what, minus 1 by 2, minus 1 by 2. तो minus 1 by 2 ये क्या होता है, करेक्ट ऑप्शन होता है. ये क्या होता है, करेक्ट ऑप्शन होता है. तो अगर आप लिमिट के प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, सो इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व देयर एग्जांपल्स देयर इन लिमिट, यस, सो अप्लाइंग बाय, यस, either you apply by L'Hospital rule or by using their, yes, standard results in limits, standard results in their limits. Okay, see the next. The value of e raised to 3x minus 6 minus 1 upon sine of 2 minus x is equals to the value of, मतलब ये आप लोगों को सॉल्यूशन फाइंड करना है. So we know their result, result of exponential.
And what is the result of exponential? Here we have the result of exponential. Limit to e raised to x minus 1 upon x as x tends to 0, it is 1. It is क्या होता है? log of e to the base e ना. So a raised to x minus 1 upon x मतलब log a होता है. तो यहाँ पे रिजल्ट क्या मिलेगा आप लोगों को? log of e. और नेचुरल log में बेस क्या होता है? एक्सपोनेंशियल ना. तो इट इज 1 ना. इट इज 1. तो इसी फॉर्म में ये फंक्शन है. तो आप कैसे एक्सप्रेस करोगे? नाउ वन मोर इज देयर, sin of 2 minus x. So we have here the result of sin. Limit कौन सा रिजल्ट हो सकता है? देखो, sin of x upon x as x tends to 0 that is equals to 1. ये क्या होता है? 1. तो ये रिजल्ट यहाँ पे अप्लाई करने दे. राइट. लिमिट क्या होगा रे? लिमिट एज x टेंड्स टू 2 होता है. I forgot to write here. So you have to consider the or you have to take here the limit as x tends to 2. तो क्या होगा देखो. See here the limits. So limit as x tends to 2 ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो आप कैसे लिख सकते हैं? देखो, e रेस टू 3x minus 6 मतलब क्या होगा रे? 3 times into x minus 2. I will arrange here the function in systematic form. अपॉन क्या होगा रे? अपॉन को क्या होना चाहिए? e रेस टू x minus 1 upon x चाहिए, बोल रहे ना. e रेस टू x minus 1 upon x that is log e, it is 1. उसके फॉर्म में आप लोगों को एक्सप्रेस करना है. मतलब ये कैसे एक्सप्रेस करूं मैं? 3 times into x minus 2. अगर आप 3 times into x minus 2 एक्सप्रेस ऐसे कर रहे हैं तो नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है? देखो, नेक्स्ट फंक्शन में ऐसे लिखूंगा 1 अपॉन ये जो फैक्टर आप लोगों ने लिया है ये डिवाइड क्या है? मतलब मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा आप लोगों को. तो मल्टीप्लाई आप कैसे करेंगे? देखो, साइन ऑफ 2 माइनस एक्स ये आप कैसे लिखोगे? साइन ऑफ x माइनस 2. साइन ऑफ माइनस थीटा इज व्हाट? माइनस साइन थीटा. तो या अगर आप x माइनस 2 के फॉर्म में लिख रहे हैं तो क्या होगा? ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, देखो, साइन ऑफ 2 माइनस एक्स इज आप कैसे लिखोगे? साइन ऑफ माइनस टाइम्स इंटू एक्स माइनस 2. साइन ऑफ माइनस थीटा काय असेल? माइनस साइन थीटा. माइनस साइन. तो वैसे आप लोगों को ये लिखना है. कैसे लिखेंगे? माइनस इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस 2 अपॉन अगर आप लोगों ने यहां पे क्या लिया है? यस, 3 टाइम्स इंटू एक्स माइनस 2. मुझे यहाँ पे क्या कौन सा एंगल चाहिए? एक्स माइनस 2. सो डिवाइड भी होना चाहिए ना. तो सो दैट देयर फैक्टर्स विल कैंसिल. 3 टाइम्स इंटू एक्स माइनस 2 ऐसे होगा. इसी का लिमिट क्या हो सकता है रे? ई रेस टू ये होल टर्म अपॉन होल टर्म है माइनस 1. ये देखो, एक्स की जगह क्या होता है? 3 टाइम्स इंटू एक्स माइनस 2. दैट शुड बी देयर इन प्लेस ऑफ डिनोमिनेटर. यहाँ पे डिनोमिनेटर में अगर ये टर्म के आप एडजस्टमेंट कर रहे हैं मतलब डिवाइड भी करना चाहिए तो दोनों कैंसिल करेंगे तो आप लोग सेम टर्म मिलते हैं ना. सो विल गेट देयर सेम टर्म आफ्टर सिंपलीफाइंग. और है ना. तो इसका लिमिट क्या होगा रे? इसी का लिमिट 1 होगा. दैट इज लॉग ऑफ ई ना. लॉग ऑफ ई मतलब इसका लिमिट 1 होता है. नेक्स्ट में क्या होगा? देखो, साइन एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2 एज एक्स टेंड्स टू 2 ये भी क्या होता है? 0 होता है ना. साइन 0 अपॉन 0 मतलब ये भी 1 होता है. तो खाली क्या रहेगा रे? माइनस 1/3. 3 जो है वो न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा तो दैट इज माइनस 3. तो सॉल्यूशन क्या मिलेगा? माइनस 3 मिलेगा. तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? माइनस 3. तो आप लोगों को करेक्ट ऑप्शन क्या मिलेगा? माइनस 3 मिलेगा. ऑलराइट. Yes. See the next example here in this. They're on topic of limits. I am taking their different type of examples. They are not connected with each other. So every example is different. See the next. Limit as x tends to 0 to असं लिमिट असेल 15 रेस टू एक्स माइनस 3 रेस टू एक्स माइनस 5 रेस टू एक्स प्लस 1 अपॉन x इंटू 10x.
x इंटू कैंसिल tan x इज इक्वल टू, आप लोगों को ये प्रॉब्लम बहुत लेंदी लग रही है, बट इट इज नॉट लेंदी, इट्स वेरी सिंपल। ये सिंपल हो सकता है, सिंपल आप कैसे बना सकते हैं? सो वी हैव वन ऑफ द रिजल्ट्स इन लिमिट. So here in this, I will expand their function in, yes, different manner. So limit as x tends to 0 to, ये देखो 15 रेस टू एक्स में ये 15 आप कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 5 रेस टू एक्स, एंड वी यू नो देयर इंडेक्स लॉ, दैट इज ए बी रेस टू एक्स. आप कैसे लिखोगे? ए रेस टू एक्स इंटू बी रेस टू एक्स. तसं आपण लिहू शकतो ना. 15 रेस टू एक्स आपण कसं लिहिणार सांगा? 15 मीन्स व्हॉट? 3 इंटू 5, नॉट 3.5. 3 into 5 raised to x, not 3.5. You mean that 3 raised to x. Raised to x minus 5 raised to x plus 1 upon x tan x is there. अभी क्या करना है? लिमिट एज एक्स टेंड्स टू 0 टू, यहाँ पे क्या होता है? एक्सपांड कर रहे हैं 3 रेस टू एक्स इंटू 5 रेस टू एक्स, तो 3 रेस टू एक्स कॉमन होगा ना. सो 3 रेस टू एक्स इज कॉमन. सो व्हाट इज दैट रिमेनिंग? 5 रेस टू एक्स माइनस 1 असं मिळेल. और इसमें से माइनस कॉमन लेना तो क्या होगा? 5 रेस टू एक्स माइनस 1 असं भेटणार तुम्हाला. लक्षात आलं? सो अपॉन एक्स इंटू टेन एक्स इज देयर ऐसा भेटे. ओके, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर कौन सा होता है रे? 5 रेस टू एक्स माइनस 1 है, ये कॉमन फैक्टर होता है. कौन सा फैक्टर कॉमन है? 5 रेस टू एक्स माइनस 1 एक कॉमन फैक्टर है. तो क्या मिलेगा आप लोगों को? लिमिट एज एक्स टेंड्स टू 0 टू 3 रेस टू एक्स माइनस 1 इंटू 5 रेस टू एक्स माइनस 1 अपॉन, मैं ये कैसे लिख रहा हूं देखो, अपॉन मतलब 1 अपॉन एक्स इंटू टेन ऑफ एक्स. ये जो एक्स है आप कैसे सिंप्लीफाई करोगे? हाउ यू सिंप्लीफाई दैट टर्म? यहाँ पे मैं ये जो एक्स है वन ऑफ द टर्म ऑफ एक्स, सो आई विल टेक हियर इन प्लेस ऑफ डिनोमिनेटर फॉर फर्स्ट फैक्टर इथं लिहितो, and one more factor or one more term of x you require for second factor also. When you divide throughout this by x, so यहाँ पे भी डिवाइड करना है, तो x x कैंसिल होगा, x tan x से प्रीवियस टर्म मिलती है. And when you apply the limit as x change to 0 to that whole terms, actually there are three more functions and which are in the form of product. So limit of product is equal to product of the limits. ये तीनों फंक्शन का लिमिट आप लोगों को सेपरेटली इवेल्युएट करना है. अगर आप इवेल्युएट कर रहे हैं सेपरेटली तो क्या मिलेगा? लिमिट टू 3 रेस टू एक्स माइनस 1 बाय एक्स एज एक्स टेंड्स टू 0 इट इज log 3. इसका आंसर log 3 मिलेगा क्योंकि आप लोगों को रिजल्ट मालूम है. दूसरा क्या होता है देखो, 5 रेस टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, मतलब ये log 5 होता है, log of 5. और तीसरा क्या होता है रे? लिमिट टू tan x अपॉन x एज x टेंड्स टू 0 इट इज 1, मतलब log of 3 into log of 5. ये करेक्ट आंसर होता है ना, log of 3 into log of 5. We cannot take here the multiplication of real numbers. So write these terms as it is. Suppose there is addition sign between them, so we have to take their product of numbers. There is multiplication sign between them, so we cannot find their multiplication of their numbers. So the correct solution will be log of 3 into log of 5 or log of 5 into log of 3. ये correct answer होगा. Okay. See here the one more example. Limit as x tends to 0. ये लिमिट कैसे लेना है? a raised to x plus b raised to x plus c raised to x plus d raised to x upon 4 whole raised to
1/x इज, ये भी लिमिट आप लोगों को बहुत लेंदी लगी, लेकिन उतना तो लेंदी नहीं है। So actually I have not taken their all as a critical examples. I have taken their examples in the form of easy as well as their critical, no doubt. Simple, medium and hard, such a kind of examples I have taken. Okay, तो इनका आप लिमिट आप कैसे फाइंड करेंगे? So we can say the limit to their function as x tends to 0. Are you observing here? लिमिट अगर आप अप्लाई कर रहे एज एक्स टेंस टू जीरो, सो ए रेस टू जीरो क्या होता है 1, बी रेस टू जीरो इट इज 1, सी रेस टू जीरो इट इज 1, डी रेस टू जीरो इट इज 1, मतलब 1 + 1 देयर एडिशन ऑफ 1 4 टाइम्स, मतलब 4/4 इट इज 1, एंड 1 रेस टू क्या मिलेगा रे 1/0, मतलब 1/0 मतलब क्या होगा, इंफिनिटी होता है ना, म्हणजे काय असेल 1 रेस टू इंफिनिटी होता है. देखो लिमिट अगर आप अप्लाई कर रहे तो लिमिट एज एक्स टेंस टू 0 टू e रेस टू x plus b raised to x plus c raised to x plus d raised to x upon 4 whole raised to 1/x. लिमिट कैसे होगा? दे अगर आप लिमिट अप्लाई लिमिट x से 0 पुट करें तो a रेस टू 0 1, b रेस टू 0, c रेस टू 0, d रेस टू 0 ऑल आर 1, मतलब 4/4 इट इज 1, मतलब 1 रेस टू क्या मिलेगा रे 1/0 इंफिनिटी, 1 रेस टू इंफिनिटी. So we are getting the limits in index form. You convert there to linear form, and this is possible to express only by applying their log. So we can say it is L. So this limit is nothing but L. Take log on both these sides. Right? So log of L is equals to limit as x tends to 0 to. Here in this case, I will apply the limit directly. देखो log of m raised to n, मतलब n log m. मैं यहाँ पे कैसे लिख रहा हूँ, log of, right ना, a raised to x plus b raised to x plus c raised to x plus d raised to x upon 4 whole raised to 1/x. right? तो log of m raised to n आप कैसे लिखते हो, 1/n into log of m, मतलब ये आप कैसे लिखोगे, देखो limit as x tends to 0 to, बराबर, log of a raised to x plus b raised to x plus c raised to x plus d raised to x अपॉन 4 है ना, log of a by b आप कैसे लिखोगे, माइनस log of 4, है ना, ये 1/x यहाँ पे मल्टीपल होगा ना, तो 1/x इंटू log of m होता है, मतलब 1/x मतलब a डिवाइड बाय x, मैं इसलिए अगर यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो यू विल गेट देयर सेम लिमिट्स, a रेस टू 0 प्लस b रेस टू 0 प्लस c रेस टू 0 क्या होगा रे 1 होता है, मतलब एडिशन ऑफ 1 4 टाइम्स दैट इज log of 4 माइनस log of 4 0 होता है. सो 0/0 मतलब क्या मिल रहा है आप लोगों को, इंडिटरमिनेट फॉर्म मिल रहा है, राइट. सो इन दिस केस वी विल अप्लाई देयर यल हॉस्पिटल रूल. इथं आपल्याला काय करावं लागेल, यल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करावं. तो आप कैसे अप्लाई करेंगे यल हॉस्पिटल, मतलब क्यों अप्लाई कर रहे, व्हेन देयर लिमिट टू देयर फंक्शन इन द फॉर्म, अगर 0/0 और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी के फॉर्म में मिल रहे हैं तो आप लोगों को क्या करना है, यल हॉस्पिटल. तो यल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, देखो टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर सेपरेटली. तो लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन ना, सो लिमिट एज x टेंड्स टू 0 टू लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन क्या होगा, a रेस टू x प्लस b रेस टू x प्लस c रेस टू x प्लस d रेस टू x, बराबर ना, असं होईल. और फिर से ये लॉग का डेरिवेटिव हुआ, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ टर्म इन लॉग, तो a रेस टू x का डेरिवेटिव क्या होता है, a रेस टू x इनटू लॉग प्लस b रेस टू x इनटू लॉग b प्लस c रेस टू x इनटू लॉग c प्लस d रेस टू x इनटू लॉग ऑफ b, बराबर है ना, ऐसे मिले. माइनस log 4 का डेरिवेटिव 0 ऐसे होता है, एंड होल डिवाइड बाय x का डेरिवेटिव क्या होता है रे 1, नॉट नेसेसरी टू राइट देयर 1. अगर
यहाँ पे लिमिट अप्लाई करे एज एक्स टेंस टू 0, तो क्या होगा रे? ए रेस टू 0 1, बी रेस टू 0 1, सी रेस टू आल्सो 1, डी रेस टू 0, इट इज आल्सो 1, मतलब एडिशन ऑफ 1 हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम्स, सो 1/4 मिलेगा। यहाँ पे 1/4 मिलेगी इनटू ए रेस टू 0 1, मतलब लॉग ए रहेगा, बी रेस टू 0 1 लॉग बी, सी रेस टू 0 लॉग सी एंड डी रेस टू 0 लॉग डी होते हैं। मतलब यहाँ पे क्या रहेगा रे? लॉग ऑफ ए प्लस log of b plus log of c plus log of d। इसका मीनिंग क्या है रे? डू गेट देयर मीनिंग ऑफ log of c, log of c, log of d, so log of a plus log of b plus log of c plus log of d, and what is sum of them? Sum of them is what? 1/4 times into log of abcd, yes, log of abcd ऐसे मिले। So one more is that here in LHS there is log L, ऐसा में तो log L, और RHS में क्या होता है? 1/4 टाइम्स into log of ABCD, मतलब n log m। आप कैसे लिखोगे? log of m raised to n, मतलब log of क्या होगा रे? E B C D raised to 1/4 होते हैं, बराबर है ना? ये दोनों तरफ log होता है तो log कैंसिल होगा। What is that? L is equals to क्या मिलेगा आप लोगों को? ए बी सी डी रेस टू क्या होगा? 1/4 होते हैं, बराबर? तो ये सही है, आंसर है देखो। सो लिमिट टू देयर फंक्शन एज एक्स टेंड्स टू 0, आंसर क्या होगा? ए बी सी डी रेस टू 1/4, ये करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन होता है। यस, सो आर यू क्लियर? देयर आर ऑल एग्जांपल्स with their results of their limit. Okay, so I conclude here this session. Anybody have their queries, you can ask. So otherwise you can ask your query on their WhatsApp WhatsApp group. Okay, stop here.